यहाँ तो 5,000 थिएटर भी भरना मुश्किल हो रहा है आजकल। लेकिन आई थिंक द पॉइंट इज, जैसे यूएस गवर्नमेंट ने आज से करीब 12 साल पहले सोपा और पीपा ये 2 कानून वो लाए थे, और वो इतने कारगर है कोमल जी कि अमेरिका में आपको दहशत होती है पायरेटेड कुछ देखने की, बिकॉज देयर आर इंस्टेंसेस वेयर दे हैव कम एंड नॉक योर डोर टू टेल कॉप्स कि यू हैव पायरेटेड समथिंग। इट इज दैट सीरियस। सो आई थिंक उसमें हाँ, क्योंकि पायरेसी क्योंकि वो एक क्राइम है, तो उसमें गवर्नमेंट की हेल्प चाहिए। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉर्पोरेटाइजेशन, दैट इज ऑल्सो अबाउट लेजिस्लेशन एंड यू नो गेटिंग द गवर्नमेंट and the corporates to work together. So when Anees bhai complains, there is a cop somewhere going to that house from where this was uploaded. You know, वो seriousness सरकार को भी I think उसमें बराबर का हकदार होना पड़ेगा, जैसे कि US गवर्नमेंट को पता है कि it's such a big industry. So I think those kind of things are required for it to work. Like if you just see how the airline industry happened, it's an industry. So they got privatized in 91, then they opened the big cities, then they went to the smaller sectors, and they said we will transfer, train people should go over this thing, then the tech career came. Now that's looking at an industry, right? So that thing of seeing from the top and seeing, okay, what all has to be done so that this whole thing grows, that is going to be the true corporatization of वो अभी तक नहीं शुरू हुआ। मिसाल के तौर पर अभी पिछले 6 महीनों में ये जो बॉयकॉट बॉलीवुड की फिल्म हमको नहीं देखनी है, ताजुब की बात यह है कि इंडस्ट्री लेवल पर किसी ने एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। When it is going to affect and it is affecting every film, how much we don't have the figures, you know. We can't say whether collections are being affected because of the boycott movement जो चला है. We can't even say whether ये boycott movement actually collections को affect कर रहा है या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर फैशन बन गया है, you know. तो आप लोगों की क्या थिंकिंग है इस संदर्भ में? मुझे लगता है कि चाहे इफेक्टेड कलेक्शंस को करे या ना करे, एक इनसिक्योरिटीज तो हमें पैदा होता ही है एज ए क्रिएटिव पर्सन। इसलिए कि जब हमने इतनी मेहनत करके फिल्म बनाई है और अगर इस तरह चीज़ें देखते हैं तो नेचुरली वो एक टेंशन क्रिएट होती है। और उस वक्त जब फिल्म हमारी रिलीज होती है ऑलरेडी हम लोग बहुत टेंशन में होते हैं, इसलिए कि हमारी पुरानी फिल्मों का और आगे काम का, क्योंकि एवरी फिल्म मेक्स यू कि भाई आगे आपको कितना काम मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो एवरी फिल्म इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। एंड उस टाइम पे एक नया ये एडिशन जो टेंशन है, आई थिंक दैट इज नॉट अ गुड साइन। एंड येट द इंडस्ट्री इज नॉट रियली टेकिंग अ स्टैंड, कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई कमेंट नहीं। According to me, I would think that the industry should have united, held a press conference, called the media and proved with facts कि हम boycott करने जैसी चीज या इंडस्ट्री है ही नहीं, हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। एंड हर इंडस्ट्री में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, हर इंडस्ट्री के लोगों से गलतियां होती है, कुछ लोगों से, लेकिन 4 लोगों की गलतियों की वजह से 400 इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स को एक ही ब्लैंकेट बैन में ले ले, ब्लैंकेट बॉयकॉट में ले ले, एंड उनको लगता है कि इस स्टार की फिल्म हम बॉयकॉट करेंगे तो फिर ये रास्ते पर आ जाएगा। स्टार्स तो रास्ते पर आ ही नहीं सकते ना, रास्ते पर आते हैं वो जो डेली वेज वर्कर्स होते हैं। तो उनका सोचने के लिए, उनके बारे में सोचने के लिए, who is representing the industry in front of the world, in front of this boycott brigade? कोई नहीं। सो ये भी तो एक कॉर्पोरेट कल्चर का ही हिस्सा है ना। आप कॉर्पोरेट बन गए हैं तो कॉर्पोरेट की तरह कोई और इंडस्ट्री में ऐसा हो तो पूरी इंडस्ट्री एक साथ खड़ी हो जाए, कंस्ट्रक्शन लॉबी पूरी खड़ी हो जाए। अगर कंस्ट्रक्शन के बारे में ये बोले कि बिल्डिंग में फ्लैट ही मत देना क्योंकि एक बिल्डिंग गिरती है, इसका ये मतलब थोड़ी कि सारे बिल्डर्स की बिल्डिंगें करेंगे तो हम फ्लैट लेना ही बंद कर देंगे, ऐसा नहीं होता। और अगर ऐसा होता है तो द एंटायर इंडस्ट्री यूनाइट्स एंड मीट्स द गवर्नमेंट, इश्यूज अ जॉइंट स्टेटमेंट वगैरह। ये क्यों लैकिंग है इस इंडस्ट्री में? हम सब बिजी है, आप सब बिजी है अपनी फिल्मों में, पर वो तो सब बिजनेस में ऐसे ही होता है ना, सब अपना अपना कारोबार देख रहा है, सब अपना अपना बिजनेस देख रहा है, बट व्हाई इज देयर नो जॉइंट एफर्ट टू क्लियर द एयर? That's actually the lack of corporatization, no? Which is where the government support and the industry needs to come together like any other industry, right? Needs to come together to form the rules and regulations. But the government support will also come when the government sees that the industry is united. If the industry doesn't give a united picture, no government is going to step forward and say, "Come, I will unite you." You go unitedly, definitely the government will help you. You will say, कोमल जी, अपनी यूनियन कितनी है? पहले तो आप ये देखिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में
कितनी यूनियंस है? आज जब आप एक प्रोड्यूसर बनते हो आपके पास ऑप्शन है कि आप फला यूनियन में हो या ढिमकी यूनियन में हो, तो आपकी यूनियन ही एक यूनियन नहीं है और हम यूनिटी की बात कर रहे हैं। आई थिंक प्रॉब्लम ये है कि कॉर्पोरेटाइजेशन तो हो गया, पैसा तो आ गया, इंस्टीट्यूशंस आ गए, लेकिन वो इंडस्ट्री नहीं बन पाई जिसकी कोशिश थी शायद अटल जी द्वारा सन 2000 में, सुषमा जी द्वारा। आई थिंक सुषमा जी had announced the so I think उनका जो सोच थी कॉर्पोरेटाइजेशन से ज्यादा उनकी सोच थी कि इंडस्ट्री बने, पर इंडस्ट्री कहाँ बनी? क्योंकि जैसे अभी आपने खुद ही बोला, जब एक कंस्ट्रक्शन लॉबी है, अगर एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो वो एक इंडस्ट्री है, होटल इंडस्ट्री है ना, फिल्म इंडस्ट्री नहीं है। आई थिंक कहीं ना कहीं जो विकास इज ट्राइंग टू से इज द सेम पॉइंट। कॉर्पोरेटाइजेशन मतलब टू मेक आवरसेल्व्स एन इंडस्ट्री, एंड आई थिंक सबसे पहले तो ये जो वर्ड है बॉलीवुड, इसको त्यागने की जरूरत है, क्योंकि ये किसी एक शायद जर्नलिस्ट के मजाक का परिणाम था और आज तक हम उसको ढो रहे हैं, एंड टुडे वी आर टेकिंग द हीट फॉर इट। क्योंकि जिस इंडस्ट्री का नाम ही किसी चीज का मिमिक्री हो, वो इंडस्ट्री ओरिजिनल कैसे होगी? तो सबसे पहले तो आपको उसको त्यागने की जरूरत है। अगर आप पूछे तो इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि आप इतने बड़े करोड़ों जनता से सवाल नहीं पूछ सकते। वो सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा कि ये यहाँ तक पहुंचा ही क्यों? Somewhere we need to also, were we making great films? Like I said, the suits have been there to pay you. Are you ready as creatives to make great films? And I'm not saying just one or two directors or producers. As an industry, now coming to industry, again, are you an industry? And once you are, that unity will automatically, once आपके नुकसान से मेरे को फर्क पड़ेगा, तो हम ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री, वो इंडस्ट्री ऑर्गेनिक इंडस्ट्री हो। बहुत सही कहा कि आपके नुकसान से अगर मुझे फर्क पड़ने लगा तो हम सब एज एन इंडस्ट्री सोचेंगे। खुद के बारे में तो हर कोई इंसान सोचता है, लेकिन देयर इज अ लार्जर पिक्चर आल्सो, व्हिच लार्जर पिक्चर इज नॉट रियली इमर्जिंग currently. There's a basic reason why it happens, and actually it's nobody's fault. Every other business runs mostly on a daily basis. So when somebody says that I will not do this, everybody gets affected at the same time, right? So if there's a truck strike, then everybody is affected together. Our business is only that person affected on that Friday, and I am worried when 6 months later when my movie is coming, is it there? So because, and that's a very natural, so therefore we have to circumvent it, because right now you have to worry only about your that Friday, and if I'm not facing the trouble, then why should I step in over there? Which is the genuine thing, right? You're not going to just enter any. So we have to circumvent it and find another way to say that when we're in a crisis or a crisis is coming or something is coming, how do we convert that and make us responsible for all of that? Because it's not going to happen otherwise. It's very natural, right? If I'm not, yeah. प्लस क्योंकि ये स्पेकुलेटिव इंडस्ट्री है, बहुत ज्यादा स्पेकुलेटिव इंडस्ट्री है, इट इज सो स्पेकुलेटिव, समटाइम्स आई थिंक इट्स मोर स्पेकुलेटिव देन द शेयर बाजार। दैट इनहेरेंट फियर कि मेरी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, जब भी रिलीज होगी, उसको टेंशन को कम करने के लिए द ओनली वे इज, किसी की फिल्म फ्राइडे को फ्लॉप होती तो यू फील चलो अगर मेरी भी फ्लॉप हुई तो मैं उससे ज्यादा बुरा तो नहीं हूँ। सो इट साउंड्स वेरी पॉलिटिकली इनकरेक्ट, बट I receive calls on Friday. Yes, हमारे में सब नंगे हैं। I receive phone calls. I receive phone calls. Suit. I receive phone calls on Friday. इसकी रिपोर्ट कैसी है? The other person has seen the film. ये genuine है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। The other person has seen the film, not liked it. Probably it is carrying good reports. कोमल, पिक्चर कैसी है? बहुत अच्छी है। हाँ, अच्छी है। चल बाद में बात करता हूँ। अगर मैंने कह दिया हाँ अच्छी नहीं है ना, पागल हो गया, ये हो गया, 15 मिनट तक that conversation go because he is very happy not in a frustrated way, happy because he feels कि अब जब मेरी फिल्म आएगी, I will also be one among those failure वाले filmmakers. But अगर किसी की फिल्म चल गई, success ratio इस इंडस्ट्री का is 18 to 20%, these days probably 12 to 15%. So, to be in that 12 to 15% is a big task, and nobody knows the formula. कोई formula तो है नहीं. Any film can click, any film can flop, and it's not as if one comedy, इनकी comedy भूल भुलैया 2 चली है, इससे 6 comedy चल जाएगी, ऐसा नहीं है. या इनकी कोई social drama चला है, तो सारे social drama चलेंगे, ऐसा नहीं है.
therefore that whole thing about insecurity and therefore solace in the fact that somebody's film is not working, probably that is also one reason why unity is lacking. I think so. But what you said is very right, that this is the real corporatization, or getting the corporate culture in the truest sense of the term. You know? I think we've discussed quite a lot. Let me throw this house open to the audience. I'm sure you all would be having questions. Please introduce yourselves and keep your questions brief. Let the replies be longer. Yeah. कॉर्पोरेट हर चीज को तो कैलकुलेट कर रहा है एक्सेल पे, लेकिन राइटिंग और कंटेंट पे कितना काम कर रहा है? इस साल बॉक्स ऑफिस देखा जाए तो बहुत ही बुरा रहा है। तो कंटेंट पे कॉर्पोरेट कितना टाइम देने को राजी है? जैसे आपने कहा राज कपूर साहब बहुत टाइम देते थे, घर पे गिरवी रखा, लेकिन उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था अपने कंटेंट से। आज कॉर्पोरेट कितना कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? आप चारों से जाना चाहूंगी। चलने रही है तो मेरी तो बोलती बंद हो गई। नहीं, आप एक्सेप्शन है नहीं सब। मुझे लगता है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि कॉर्पोरेट जो है वो अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उसमें मैं ये भी कहूँगा कि कुछ लोग जो हैं वो कॉर्पोरेट में ऐसे भी हैं जो ये समझ रहे हैं कि क्रिएटिविटी क्या है, लेकिन उनको एक टीम, कुछ लोग ऐसे अपने साथ जोड़ने होंगे जो, मुझे लगता है क्रिएटिविटी किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज ना हो, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो एक, और ये इतने जो बिजनेस माइंड लोग हैं, इतने ब्रिलियंट लोग हैं, ये खुद समझदार है कि भाई अपना माइंड यूज करके कि भाई क्रिएटिव जो लोग हैं वो एक टीम रहे और वो उनको इन्फ्लुएंस करने के बदले उनसे इन्फ्लुएंस रहे क्रिएटिव लोगों से। अच्छा, ये है बजट, पैसा अपनी जगह है, बट एक कन्विक्शन, एक पैशन, उसका कोई दूसरा वर्ड ही नहीं। अगर वो है और वो सही चल रहा है तो मुझे लगता है कि वो, जिस तरह मैंने पहले कहा कि फिल्में जो हैं वो ज़्यादा हिट हो सकती हैं। Thank you. Mike from Kolhapur, Maharashtra. Thanks, Komalji. Some of the questions were also in my mind, which you compelled them to answer. But to that, I am the one belongs to a major stakeholder, that is the audience. So, I have still a question after listening to you, that whether we will be dictated by the corporate culture. Our taste, our liking and dislikings, or what to see and what not to see will be decided by Excel sheet fellow or the MBA fellow. One. Second, does the corporate culture has benefited the down strategy, like a spot boy or cameraman or all those the lowest strata of the industry? And if at all it is an industry. That's what, and of course that creativity is still there because he has partly answered. लेकिन मुझे जानना है उनसे, ये गट फॉर्मूला या गट सॉफ्टवेयर कहीं जोगरू तलिया मिलता है या बेंगलोर या हैदराबाद में या पुणे में? तो सुनने में लग रहा है कि कोल्हापुर में मिल रहा है। Kolhapur has a special place in the industry. It is the place where the industry started. That is why everywhere I always say from where I belong. Yes, you should be proud of the place you come from. I don't think there is any dictating happening by the corporate world. It's totally our call who, if I have written a film, who I want to take it to. And corporatization is also a loose term right now. Right now, T-Series is probably among the biggest producers in the country. And not I don't know whether it's corporate or it's not corporate, right? But, well, they have a 11th floor building and they have computers and they have people who come to office. It's a corporate, right? But actually, it's one man's vision who's taking it forward. So this corporate actually very loose term to say what is corporate, what's not, because that's actually one individual sitting there. You'll go to another Viacom, you'll go to, maybe they'll have a proper, teams there. So the corporates are of all kinds, and I don't think they're in any way wanting to dictate or, and there's a lot of advantage of corporate. Like I remember when I wanted to produce DT, and at that one time I was not getting much support to make that film. And there was this person called Sunil Wadhwa who was our distribution head in UTV.
And he made a plan and went separately to Ronnie and said, please let him make this film because this is what I plan to do with it. And actually it's a distribution guy who finally convinced him because I was very new in the business. So there are advantages and disadvantages. अगर वो एक ही जाना शायद होता तो देवली शायद नहीं बन पाती, you know. It is actually because the team came together and convinced the boss and said, we should do this. And I remember Shikha, who was a marketing head, made a poster before the movie. We narrated the movie. So this distribution guy with the plan, she came with the posters, I went with the script, and we convinced Ronnie that we really want to do the film. So there are advantages again in that word. So it's not a beast we have to get rid of. We need to embrace it. If I might add, आपने कहा मैं एक important stakeholder हूँ, and am I going to be dictated by the corporate? जनता जनार्दन बोलते हैं, you can dictate, nobody can dictate. You stop spending money on the film, that kind of film will never be made. So you can influence everybody else, not vice versa. Yes. Not vice versa. Yes. Because see, the social marketing and the market formula is with them. These MBA guys are expert in that. So that way we have see everywhere the discussion. Everywhere, जैसे आपने Friday का example लिया, आपको phone आते हैं. Same thing happens about the reviews and all that. We know that. But review से पिक्चर नहीं बदल सकता है. पिक्चर की किस्मत एक रिव्यू से कभी नहीं बदल सकती है. मैं खुद रिव्यू लिखता हूँ, but if I think I can mold public opinion, I am the biggest duffer. पिक्चर का रिव्यू आप वही पढ़ेंगे अगर आपको लगता है कि ये सही इंसान है जो सही रिव्यू दे रहा है. Otherwise you will throw that review out. You will not be bothered. You will be bothered about what your wife says, what your daughter says, what your son says, what your friends say. So after Friday, it is the word of mouth that is more important. Reviews don't matter at all. This question पूछने का ये था कि just now I saw one movie at Polvorean about one Sumi name. And the producer and the director was telling that they are not getting the screen for till July 23rd. That is the scenario. And that film has been awarded as a Lotus Award. This is a film particularly for children. And children of this country should know about that because it is children and the education the subject was. So such subjects, maybe they have no place in इंडस्ट्री का खा के, इस इंडस्ट्री से नाम कमा के, इस इंडस्ट्री से शोहरत कमा के, they are what they are today because of this industry and they are giving this industry a bad name. उनकी भी फिल्म को फिर उतना ही अफेक्ट हुआ. उनके कलेक्शंस 400 रुपए थे एक दिन के, जहां पर 40 लाख होने चाहिए, 400 रुपए थे. So they are getting it back with interest. फैलाया जाता है एक बार बोले 10 बार जैसा हमने 25 बार तो 100 बार कहा गया है और बहुत जोर जोर से कहा गया है, बहुत चीख के कहा गया है. तो ये बस किसी का नतीजा है, पर ऐसा कुछ नहीं है. मुझे लगता है कि इंडस्ट्री में बहुत इमोशनल लोग भी हैं जो आज मतलब मैंने जैसे आपको पहले एक बात मजाक में बताई थी कि भाई पहले अभी है कि चेक्स मिल जाते हैं तो ये हम लोग हैं बहुत खुशी से वो चेक पढ़े, हमको भी पता है ठीक है यार कोई बात नहीं. तो ये इतने पैसे को भूलना शायद और लोग नहीं कर सकते, ये इंडस्ट्री के इमोशनल लोग ही कर सकते हैं. Creativity can never go hand in hand with mafia. Creative लोग हैं तो वो दिल से ही सोचेंगे. दिमाग से फिल्में नहीं बनती है, पैसे आते हैं दिमाग से, लेकिन फिल्में सिर्फ और सिर्फ दिल से बनती हैं. That is why it is passion. That is why it is art. Siraj, I think you wanted to. Sir, मेरा एक क्वेश्चन है. माफिया का आंसर कार्पोरेटाइजेशन ही है. हाय सर, मेरा क्वेश्चन आप चारों से है. इन दिनों बाहुबली, केजीएफ, आरआर ऐसी जो मूवीज है बहुत कारण है साउथ की जो फिल्म है बॉलीवुड को डोमिनेट करके आगे बढ़ रही है. बाहुबली, केजीएफ और भूल भुलैया 2 साउथ की नहीं है. आरआर ये 3 फिल्मों के अलावा मुझे चौथी फिल्म नाम बताओ. पांचवी क्या होता है कि इन दिनों की और उधर की कम से कम 40-50 बन चुकी है. मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा से साउथ में बहुत अच्छी फिल्में बनाई है और हमेशा से यहाँ भी बहुत अच्छी फिल्में बनती रही हैं. अब ये है कि 3, 4, 5 फिल्में कंटारों को मिलाएं तो 5 होती है. अगर ये 5 फिल्में हम मिलाएं, देखिए फिल्में वहाँ भी बहुत बनी है. ऐसा नहीं है कि कोई भी इंडस्ट्री में
100 फिल्में बन रही है तो 100 ही कामयाब होंगी। वो हॉलीवुड में भी नहीं होता, वो साउथ में भी नहीं है। और मुझे लगता है ये कंपैरिजन करना कि साउथ ही, मुझे लगता है कि हम सारे लोग जो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे साउथ की फिल्म चले चाहे नॉर्थ की चले, हम सब खुश हैं। इसको कोई बॉर्डर नहीं है सर, ये इंडिया वुड होना चाहिए। इसको कोई बॉर्डर नहीं है। यस, Indian cinema. Hello sir. Hello sir. My 4 decades as a senior officer of bank. But the thing is, I used to do the film industry finance something. See, my observation or even from the banker's point of view, good films never win the awards or hit the box office. Good films never win the awards or the box office. But we feel the part of the bankers' point of view is film industry is nothing but a speculative business or satta bazaar. What do you say, sir? Because now we are also part of the film industry, bankers. The government is not made any policy decision regarding how to finance the film industry. One award film director, we can't finance. My question is related to this. Can I? Companies are answerable to their shareholders. So they say that it's bottom line and we have to declare a dividend and a profit at the end of the year, and that is our primary motive. So in that context, films becomes a kind of speculative activity for them. There are also angel investors. I wonder what percentage of people are angel investors who will just come and give you the money and say, go make a film. I've met a few people, but I don't know what percentage of people exist like that. Secondly, Komal, you mentioned that about 15 to 20% films are really hits. I think you are including all the borderline recovery. I said successes. Yes. So real hits would Above average. Would be less than 10%, I'm sure. Real big hits. 7 or 8%. 7 or 8%. Thank you. Hello? Speculation, yes. I mean, wherever there is business, I think there is speculation. This is a highly dynamic industry where the audience taste is changing rapidly. Nobody can say for sure that what kind of genre is working today will work tomorrow. Again, see, even in as speculative or as bet-centric thing as a race course, the horse does not know that there is a bet. He's running, and he's running to win the race. And the jockey is an artist. He is showing his abilities. I think there is a different perspective, a vantage point is what I'm referring to here. When you see it from somebody who has put up a bet and has put in money, and the people who are creatives who are making a film. The perspective is different. Till the time that perspective does not get adulterated, I think we are in good hands. Let people who put in money speculate. I mean, there's nothing wrong with that. Till the time it does not interfere, like we have been discussing, in the actual creative part of the film. Because they should also know and they should remember is that there is no formula for success in this industry. We will never know how a film, and every year there are surprises that which film will suddenly become a sleeper hit. And shocks. And shocks. Something which is great on paper might not work. So that speculation does not work. Just like how Komati said right here, reviews don't work. Because at the end of the day, this is a test of the audience, in the theatre, whether you like it or not. And also it is not about one or two audiences, it is a collective decision. I think it is the most democratic thing in the world, even more than elections, because you can't predict at all what so-called Mafia can change the fate of a film. Yeah, because it's about your mood, what you want to watch today. Abhishek, I'll tell you, you know what happens, Anar? So every other industry, they spend millions of rupees on R&D, right? तो R&D होता है, करोड़ों रुपए जाते हैं, फिर एक प्रोडक्ट निकलता है, right? हमारा R&D ना हर फ्राइडे निकलता है, right? And that R&D is out there now. So obviously that R&D, even if we have a 10% success, we're doing way better than many other industries that spend so much money to put it out there.
So that's the big difference. And Siraj, to answer your question, you said the bottom line is कि हमें dividend देना है, but that is the bottom line even in family-run businesses. कोई family-run business में ये नहीं कहता है, चलो आज मैं एक disaster बनाता हूँ, बहुत घाटा करेंगे, फिर मस्ती करेंगे. Everybody's bottom line is कि हमको पैसे कमाने हैं. So that is why it is a mixture of art and business. ये है art form, but you have to make a business out of this art form, whether corporate or not. प्रॉब्लम है कि एक बहुत समझो आपने कमाल की स्टोरी लिखी और आप चाहते हो कि वो अनीस भाई तक पहुंचे, विकास तक पहुंचे, अभिषेक तक पहुंचे, तो पहुंचेगी कैसे? और आपको मैं हकीकत बताऊं, आप तीनों को भी एक अच्छी कहानी की जरूरत है, एक अच्छी स्क्रिप्ट की जरूरत है, तो दोनों तरफ डिमांड है और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने एक तो न्यूकमर का पूरा प्लेटफॉर्म प्लान किया और हमारे दोस्त मुकेश छाबड़ा यहाँ बैठे हुए हैं. मुकेश भाई एक मिनट आएंगे आप? मैं आपको एक बहुत बड़ी यही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ कि मुकेश छाबड़ा और हमारे जितने भी लीडिंग फिल्म मेकर्स हैं न्यू कवर्स में जो जुड़े हैं, सब लोग मिलके एक ऐप प्लान कर रहे हैं और वो ऐप जो होगी वो राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, टेक्नीशियंस, जितने स्टूडेंट्स, फिल्म स्टूडेंट्स, वो लोग हमारे लीडिंग फिल्म मेकर्स तक कैसे पहुंचे उसके बीच की ब्रिज का काम करेगा. और मैं उसके लिए हमारे दोस्त मुकेश छाबड़ा को और हमारे लीडिंग फिल्म मेकर्स को थैंक यू बोलना चाहूंगा कि वो सब एक ऐप में जुड़े. सर एक तो है वेरी एक्सीलेंट. अब आपकी बात छाबड़ा था. जब एनर्जी का सवाल खत्म हो जाते हैं, जब आप मुझे देने को तैयार होगी तो आपको ये एक्टर, राइटर, डायरेक्टर इन लोगों को मिलना है. सिंपल सी बात है, हम अपना नंबर दे देते हैं, इस सवाल को खत्म करते हैं, ईमेल आईडी दे देते हैं ताकि सबको ईमेल आईडी फैल जाए, सबको पता है क्या ईमेल आईडी, क्या नंबर है. इन सबके नंबर मैं नहीं दे सकता, आप मुझे वेतन में यहाँ तक पहुँचा दूँगा. सर एक्चुअली क्या रहता है कि जो भी राइटर्स हैं, आपने देखा होगा कि सबको एक ही डर रहता है कि हमारी स्टोरी हम किसी को देते हैं तो कॉपीराइट ना हो जाए, तो इसलिए वो कॉपीराइट चोरी ना हो जाए, तो ये हर किसी को डर रहता है. तो ये पहले तो ये डर करना पड़ेगा. ये काम करने हम ये काम करने का नहीं बैठे हैं. अब रजिस्टर करवा लो. रजिस्टर करवा लो, सबके नंबर मिलता है और हम ये काम करें. हम पूरी इतना चोर हैं. नहीं सर, मैं आपकी नहीं कह रहा, आप तो सर हमारे सीनियर, आपकी नहीं कह रहा, न्यू कमर आप तक पहुंचाने के लिए. अरे वो क्या तो हम एक ऐप बना रहे हैं जिसके अंदर एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और जितने भी टेक्नीशियन, एडिटर सब उसके अंदर अपना अप्लाई कर सकते हैं. वो ऐप फ्री है, सब लोग उसका अप्लाई करते हैं. वो ऐप का नाम बता दीजिए सबको. ऐप का नाम जल्द शुरू होगा. जल्दी वो ऐप शुरू होने वाला है. उसका काम 90% हो गया, 10% बाकी है, तो वो अनाउंसमेंट के लिए 10% तक वेट कर लीजिए, उसके बाद फायदा होगा क्योंकि बेटर है. तो आप उसमें अप्लाई कीजिएगा और बिल्कुल टेंशन मत लो. हम सब इसलिए बैठे हैं, सब तलाश कर रहे हैं, एक्टर की तलाश कर रहे हैं, राइटर की तलाश कर रहे हैं, डायरेक्टर तो और भी और चाहिए, नए आ रहे हैं, इतना डिजिटल काम हो रहा है, इतने शोज बन रहे हैं, सबको चाहिए. तो देखिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन हम लोग लेकर आ गए हैं. बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा और आप बहुत सेफ फील करेंगे और राइट लोगों तक वो आपकी मेहनत पहुंचे, आपकी काम की जो टैलेंट है वो आप तक पहुंचे. Only one last question. Okay. So now we've seen this coming in of OTT and so much of social media influence. My question is something to keep the creative spirit intact. We've constantly been talking about how creative is what rules. I'm a writer, I'm a film journalist, I want to make films someday, but I don't know how much of my own perspective is still intact because business is one side, but I'm also influenced by everything that is happening on social media constantly. So you've been emphasized on how the creative spirit should live on for the movie business to go on. How do I do that in a world which is constantly telling me what I should be watching, what I should be looking Switch at? off your phone. Many of our top makers, blockbusters, are not on social media. I think that answers the question. नहीं, मुझे लगता है कि आप जैसे हम लोग पहले भी कहते थे कि सबकी सुनिए, लेकिन आप अपने दिल की कीजिए. इसलिए कि अगर आप सब लोगों की सुन ही रहे हैं तो वो सारी वही बातें कर रहे हैं जो हो चुकी है और जब आप आएंगे तो कुछ नयापन नहीं होगा. अगर किसी भी इंसान को जब इस इंडस्ट्री में आना है तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट जो पहलू है वो है कि उसमें कुछ नयापन हो. जो पुराने लोग काम कर रहे हैं उससे कुछ अलग
अलग हो, उसकी अलग पहचान हो। अगर वो अपनी पहचान ही इन लोगों की बातें सुनकर खत्म कर रही हैं तो मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। आप अपनी कन्विक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग रखिए, आप अवेयर रहिए कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या चलना चाहिए। आप पूरी मेहनत कीजिए, आप वर्ल्ड सिनेमा देखिए हर जगह कि भाई अगर ये एक सीन अगर आपको रुला रहा है तो इसके पीछे वजह क्या है, क्यों इस पर्टिकुलर सीन पे मुझे आंसू आए। तो जब आप उस पर बैठ के, आपको किसी टीचर किसी प्रोफेसर की जरूरत नहीं है, आप खुद एनालाइज कर सकते हो पढ़कर, फिल्में देखकर, कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं कोई डायलॉग आपको हंसाता है तो क्यों हंसा रहा है। तो जब आप अपनी पहचान को खत्म मत कीजिए, आप पूरी दुनिया की सुनिए, लेकिन करिए आप वो जो आपका दिल सही कहता है, आपका जज्बा कहता है आपको। क्या बात है, वेल डन। You all have been a lovely audience. Thank you Vikas, thank you Mahavir, thank you Anees bhai, Abhishek, Mukesh जी, thank you. And जैसा आपने कहा ये सेशन इनके कारण तो अच्छा था, ये सेशन और भी ज्यादा अच्छा हुआ आप लोगों के अटेंटिवनेस एंड सवालों से, एंड therefore you all are the one who will be dictating, not dictated. मैं एक खास बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इतने सारे दिग्गज फिल्म मेकर्स, सारे लोग इंडस्ट्री से जुड़े हुए आप तक आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, आप लोगों को गाइड करने की कोशिश की, और वो चाह रहे थे कि आपकी लाइफ में आप जहाँ जो भी करना चाहें उसमें आपके एक्सपीरियंस शायद कुछ काम आ जाए। और उसके लिए सबसे पहले हम सब मिलके थैंक यू कहना चाहिए IFFI को, क्योंकि IFFI ने ये सब ऑर्गेनाइज किया और हम लोग और हमारे कंस्टिट्यूएंट डायरेक्टर रविंद्र सर जी जो हमारे साथ बैठे, आपकी पूरी टीम, क्योंकि महीनों भर की आप लोगों की मेहनत है इसमें, कई रातों से आप लोग सोए नहीं है ताकि आप और हम लोग सब मिल सके। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर IFFI, रविंद्र जी एंड एंटायर टीम। I would also like to thank NFDC, the Entertainment Society of Goa, and the Satyajit Ray Film and Television Institute for organizing this and giving us an opportunity. Thank you so much. थैंक यू And thanks to all of you. Please. तो दोस्तों बड़ा ही मज़ा आया मुझे इस सेशन में, तो बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा IFFI का जो हर साल ऐसी मास्टर क्लासेस और कॉन्वर्सेशन सेशन करवाते हैं, तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। थैंक यू। मैं अभी फिल्म देखने जा रहा हूँ मोनिका, जो कि USA और इटली की फिल्म है और फेस्टिवल हिस्ट्री रह चुकी है इसकी वेनिस फिल्म फेस्टिवल। तो चलिए देखते हैं कैसी है।